जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होता है बिजनेस में। और टाइम आने और अगर उसका पेमेंट ड्यू है तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है। That's it. मैम थर्ड है अनडिवाइडेड रिस्क। जो भी होल प्रॉफिट होगा वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का अपना ही होगा, और अगर वो लॉस बियर करता है तो भी सिर्फ उसी का होगा। वो किसी से के साथ डिवाइड नहीं कर सकता। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो शेयर नहीं कर सकता। मैम दूसरा, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। और सोल प्रोप्राइटर में किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं लगती है। लेकिन कुछ केसेस में उसको लाइसेंस, सोल प्रोप्राइटर को लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे लाइसेंस उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। फिर था नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन सेम होते हैं दोनों, और जो भी असेट या लायबिलिटी होता है ओनर का, बाकी लोग सुन लिए? वो अलग नहीं होते। बाकी लोग सुन लिए जो आंसर नहीं दे पा रहे थे? यस मैम। चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड। हम लोग मैरिड और डीमैरिड बच रहा था। राइट डाउन मैरिड। अब मैरिड में क्या क्या आ रहा है? यस मैम। मैरिड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। अब बताइए, अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Now we are going to discuss about merit of sole proprietorship. कल तो ऐसे डिस्कशन हो गया था क्या क्या मेरिट के केस में आएगा। अब लिखना शुरू करिए। मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहला क्या मेरिट है कि फॉर्मेशन काफी इजी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी इजी टू स्टार्ट। इजी टू स्टार्ट, फॉर्मेशन इसका इजी होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी चूंकि नहीं करना पड़ता है, तो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज इजी टू स्टार्ट। उसके अंदर लिखिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। No legal formalities are required to set up or start no legal formalities are required to set up or start this form of organization. This form of organization. Hence, it is easy to start it. Hence, it is easy to start it. Done. Any person who is having capacity, full stop के बाद, any person who is having capacity to contract can start such enterprise. Can start such enterprise. Can start such enterprise. मैम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे पहले साउंड माइंडेड के होने चाहिए आप। ठीक है, 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए आप। राइट, ये सारा प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। तो अगर आप ये सारा मतलब फीचर्स आपके अंदर है, ये सारा क्वालिटीज आपके अंदर है, तो यू आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टार्ट सच एंटरप्राइज। कैन स्टार्ट सच एंटरप्राइज, full stop. Similarly there are no legal
requirements to close or dissolve the firm, to close or dissolve the firm. ठीक है, अगर आप बंद भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड. डन. सेकेंड मेरिट क्या डिस्कशन किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? एक तो इजी टू स्टार्ट, एक और आप ही लोग बोले थे डिसीजन मेकिंग, इजी टू काफी क्विक होता है. ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग. सेकेंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग. क्विक डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर लिखिए promptness in decision making. Promptness in decision making is another advantage of this form of organization. Full stop. Owner मैम फिर से बोलिए ना, छूट गया. ये सेकेंड पॉइंट डिस्कशन हो रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग. उसके अंदर हमने लिखाया promptness in decision making. Promptness in decision making. Promptness in decision making. 3 बार मैं रिपीट करूंगी, ठीक है, सुन लीजिएगा. Promptness in decision making is another advantage of this form of organization. Is another advantage of this form of organization. Is another advantage of this form of organization. Full stop. Owner need not consult. Owner need not consult. Owner need not consult anyone while taking decision. While taking decision. Full stop. Therefore, quick decisions are taken to capture the opportunity. Therefore, quick decisions are taken to capture the opportunity. ठीक है. इसके अलावा सीक्रेसी की बात हुई थी कि यहाँ पे चूंकि वन मैन शो है तो वो सारा सीक्रेट अपने तक रख सकते हैं. तो थर्ड एडवांटेज इज आपका सीक्रेसी. SECRECY सीक्रेसी. उसके अंदर लिखिए वन मैन कंट्रोल exists in such type of organization. One man control exists in such type of organization. One man control exists in such type of organizations. Full stop. Therefore, secrecy can be maintained. Therefore, secrecy can be maintained about the business matter. About the business matter. Done? हो गया? यस मैम. अब इसके अलावा डायरेक्ट मोटिवेशन. यस मैम. डायरेक्ट मोटिवेशन कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर जो भी काम कर रहा है तो प्रॉफिट तो उन्हीं के पास जा रहा है ना, उन्हीं के पॉकेट में जा रहा है. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न मोर एंड मोर. तो नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन. उसके अंदर लिखिए द होल प्रॉफिट goes to the proprietor. The whole profit goes to the proprietor. Full stop. Therefore, there is direct relation between effort and reward. Therefore, there is direct relation between effort and reward. Full stop. It encourages him to work hard. Next is flexibility in management. Sole proprietor does not need
consult other, full stop. He can make changes without delay. He can make changes without delay. So flexibility in management exists. So flexibility in management exists. Full stop. Policy can be changed according to the change in situation. Policy can be changed according to the change in situation. Policy can be changed according to the change in situation. Done. Next, government control जो कि कम है, this is another merit of sole proprietorship, that minimum government control or minimum government regulation. Next point will be minimum government regulation. Minimum government regulation. There is no day-to-day interference. There is no day-to-day interference in the affairs of the business, by government. Full stop. There is minimum control. There is no interference. There is no day-to-day interference in the affairs of the business by the government. Done. Full stop. There is minimum control by the government. There is minimum control by the government. Full stop. However, the rules regarding audit of accounts are applicable if sales exceeds the specified limit. If the sales exceeds the specified limit. Ma'am, repeat again. Minimum government regulation discussion हो रहा था. There is no day-to-day interference in the affair of the business by the government. Full stop. There is minimum control by the government. Full stop. However, the rules regarding audit of account are applicable if sales exceed the specified limit. ठीक है, सेल्स अगर मतलब अगर आपका बिक्री आप जरूरत से ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर आपका सेल हो रहा है, देन यू नीड टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट. ठीक है, डन. तो वहां पे आपके अकाउंट का ऑडिट किया जाएगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट वर्दीनेस. Credit worthiness. Next merit is credit worthiness. WORTHINESS. Credit worthiness. इसमें लिखिए if an individual has enough resources. क्रेडिट वर्दीनेस क्या हुआ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज अधिक है, कैश अधिक है, इन्वेस्टमेंट आप अधिक कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक क्रेडिट होगा मार्केट में. तो इस क्रेडिट की बात हो रही है कि आपका एक रुतबा होगा मार्केट में. ठीक है, एक गुडविल होगा मार्केट में. फाइन. देखिए, इफ एन इंडिविजुअल हैज इनफ रिसोर्सेज, ही विल एंजॉय क्रेडिट स्टैंडिंग among the other institution and suppliers dealing with him. Ma'am, suppliers dealing with him. ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूशन के मुकाबले वो स्टैंड करेंगे, प्लस सप्लायर्स के सामने उसका क्रेडिबिलिटी होगा. ठीक है, फुल स्टॉप. द क्रेडिटर्स एंड सप्लायर
creditors and supplier will not hesitate. Creditors and supplier will not hesitate in dealing with the owner of such an enterprise. Will not hesitate in dealing with the owner of such an enterprise. Clear? हो गया? Hesitate के बाद में क्या लिखिए, फिर से पूरा लाइन रिपीट करिए. Hesitate in dealing with the owner of such an enterprise. In dealing with the owner of such an enterprise. Next one is independent living. Independent living. It is a source of independent way of living. It is a source of independent way of living. It is a source of independent way of living. First up, sole proprietorship is suitable for those, sole proprietorship is suitable for those who want to be self-dependent. Who want to be self-dependent. It is a honorable way. It is a honorable way of living life. It is a honorable way of living life in which there is no boss. In which there is no boss. ठीक है, अगर आप भी किसी के अंदर काम करना नहीं चाहते हैं, he is a sole proprietor. Okay. Next, personality development. Next merit is personality development. Sole proprietor has to be all in all. All in all. What do you mean by all in all? Faizan Khan. What do you mean by that? First liner. क्या मैम? फर्स्ट लाइन क्या लिखी है अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? क्या क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो पहले बोल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट. फैजान बताइए. नहीं सुनाई दे रहा मैम. अच्छा, तो अभी तक क्या क्या लिखे हैं आप? अब तक क्या क्या लिखे हैं? वन इन ऑल. मानसी, आपसे पूछा नहीं जा रहा है. हेलो. हेलो. होता है कभी कभी, ऐसा ही होता है. कभी कभी क्या, आपके साथ तो जनरली होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेलो हेलो होना शुरू हो जाता है. हाँ बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सोल प्रोप्राइटर हैज टू बी ऑल इन ऑल. मैम क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉसेस खुद ही बियर करता है. वो तो है ही, लेकिन ऑल इन ऑल कहने का मतलब है कि उसकी पर्सनालिटी की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर सारा कैलिबर होना चाहिए. मैम वो खुद एक मैनेजर भी है, खुद एक ओनर वो भी सर्व है. क्वालिटी होनी चाहिए, वही सर्वे सर्वा जिसको बोलते हैं. ठीक है, ही इज ओनली सर्वे सर्वा. फाइन. तो सोल प्रोप्राइटर हैज टू बी ऑल इन ऑल. फुल स्टॉप. इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल and social virtues, development of personal and social virtues like self-reliance, comma, responsibility, comma, firm will, comma, independent thinking takes place. Independent thinking takes place. First up, these social virtue enable him to lead respectable life in society. Respectable life in society. Ma'am, repeat once. Sole proprietor has to be all in all. Full stop. In this process, development of personal and social virtue
like self-reliance, comma, responsibility, comma, firm will, comma, independent thinking takes place. Full stop. These social virtues enable him to lead respectable life in society. Then, next merit is concentration of economic power is avoided. नेक्स्ट मेरिट बताया जा रहा है कि concentration of economic power avoid किया जा रहा है. कैसे? Can anyone answer? Concentration of economic powers में हम avoid कैसे कर रहे हैं? ये मेरिट कैसे हो रहा है? मैम वो सारा का सारा प्रॉफिट को खुद ले रहा है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह भी वो नहीं दे रहा है, तो हमारे इकोनॉमिक में वो कोई. देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझिए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर यानी किसी एक के हाथ में ज्यादा पावर नहीं आ रहा है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर स्मॉल स्केल पे काम करते हैं तो एक से अधिक हो सकते हैं. बहुत लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन इजी है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप शुरू करते हैं तो आपका मतलब इकोनॉमिक पावर सिर्फ एक के हाथ में या पावर एक के हाथ में नहीं रह करके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. अंडरस्टूड? That we mean by concentration of economic power is avoided. ठीक है, write down. Sole proprietorship reduces the concentration of economic power in fewer hands. Sole proprietorship reduces the concentration of economic power in fewer hands. Full stop. In other words, decentralization of industry, in other words, decentralization of industry is promoted through this form of business organization, full stop. Since it is done on small scale, large number of people can start this business. Thus avoiding concentration of economic power. Thus avoiding concentration of economic power. मैम एक शुरू से बोल दीजिएगा. Concentration of economic power is avoided. This is the point. उसके अंदर हमने डिस्कशन किया sole proprietorship reduces the concentration of economic power in fewer hands. Full stop. In other words, decentralization of industry is promoted through this form of business organization. एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है? What do you mean by decentralization? यहाँ पे लिखा है decentralization of industry is promoted through this form of business organization. What do you mean by decentralization? मैम ऑथोरिटी किसी एक के हाथ में नहीं रहता है. ऑथोरिटी जो सोल प्रोप्राइटर तो उसके बिजनेस का तो पावर उसी के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो एक से कई लोग कर सकते हैं. यहाँ एक ही आदमी बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये है इसका मतलब. फुल स्टॉप. फिर है सिंस इट इज डन ऑन स्मॉल स्केल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन स्टार्ट दिस बिजनेस. चूंकि ये स्मॉल स्केल पे होता है इसीलिए अधिक से अधिक लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. Thus avoiding concentration of economic power. इसी तरीके से इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन यानी जमावड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ओके, तो ये था आप लोगों का मैरिड. नेक्स्ट डीमैरिड. अब बताइए, दिखाने से पहले अपना दिमाग चलाइए. डीमैरिड क्या क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं. डीमैरिड क्या क्या होगा यहाँ? अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, ये डीमैरिड है. और He has to bear all losses. you have to, yes, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बियर लॉसेस, ये भी सही है. रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है किसी एक पे. मैम बीच बीच में आवाज नहीं आता.
मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वाईफाई कनेक्टेड है। Lack of financial capital. हाँ, Lack of financing. लैक ऑफ फाइनेंसिंग, हाँ लैक ऑफ फाइनेंसिंग या लिमिटेड फाइनेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ही जन को फाइनेंस करना होता है तो ज्यादा कैपिटल वो नहीं ला पाते हैं। ठीक है, ये सब होगा। तो लिखिए डीमेरिट, डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नंबर 1 इज लिमिटेड फाइनेंस, number 1 is limited finance. This is the main limitation, this is the main limitation of sole proprietorship. थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि आज हम लोग को सोल प्रोप्राइटर, ये डिमेरिट ही लास्ट है सोल प्रोप्राइटर का, उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे। तो थोड़ा स्पीड लिखिए ताकि डिमेरिट आज खत्म हो पाए। ठीक है, द मेन लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फुल स्टॉप। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, the individual proprietor suffers from limited financial resources, suffers from limited financial resources, full stop. He depends upon his personal funds, he depends upon his personal funds, full stop. Borrowing from banks and other financial institutions, borrowing from banks and other financial institutions is neither safe nor easy for him, is neither safe nor easy for him. Therefore size of the firm, therefore size of the firm must remain small, must remain small, size of the firm must remain small. Expansion in businesses are not possible, expansion in the businesses are not possible, expansion in the businesses are not possible. Second, unlimited liability, unlimited liability. ठीक है, इसमें लिखिए the sole proprietor has to bear all risk, the sole proprietor has to bear all risk, the sole proprietor has to bear all risk in the business, in the business, full stop. If the business fails, if the business fails, his personal assets will be used to pay off the firm's liability, pay off the firm's liability. If the business fails, his personal asset will be used to pay off the firm's liability. ठीक है, तो आगे कभी पूछा जाए what do you mean by unlimited liability, तो please answer. Okay, next is limited scope for growth. Next demerit is limited scope for growth, limited scope for growth. Growth and survival depends upon the availability of finance. Growth and survival depends upon the availability of finance. Growth and survival depends upon the availability of finance. Full stop. Therefore, there is limited scope for growth. There is limited scope for growth due to lack of finance in such type of organization. In such type of organization. ठीक है, next is uncertainty of duration. Uncertainty of duration. Since the business continues to operate, since the business continues to operate till the proprietor survives, till the proprietor survives, this business comes to an end, comes to an end. If anything happens to the proprietor, if anything happens to a proprietor.
full stop. However, after the death of the proprietor, the business will pass on to his successor. The business will pass on to his successor, who may or may not possess the same ability. Who may or may not possess the same ability. ठीक है. Next is limited managerial skill. Limited managerial. Please repeat the point number 4. Uncertainty of duration. There is uncertainty of duration in such type of business organization. Full stop. Since the business continues to operate till the proprietor survives, this business comes to an end if anything happens to the proprietor. However, after the death of proprietor, the business will pass on to his successors, who may or may not possess the same ability. ठीक है. Next is limited managerial skill. Limited managerial skill. The managerial ability of the proprietor is limited. लिमिटेड क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियसली किसी के पोटेंशियल पे यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा. लिमिटेड कहने का मतलब कि ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि एक पर्सन में सारा नॉलेज नहीं हो सकता. ठीक है. वन हु इज गुड इन फिनेंस कैन नेवर बी गुड इन और कैन नॉट बी गुड इन HR पार्ट. ठीक है. और हाउ टू हैंडल द ह्यूमंस. ठीक है. जरूरी नहीं कि उसमें सारा क्वालिटी हो. फाइनेंस भी अच्छे से हैंडल करे, सारे एम्प्लॉइज को भी अच्छे से हैंडल करे, जो असिस्टेंट रखा हुआ है उनको भी हैंडल करे. पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है. तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज लिमिटेड. ही इज द सोल जज ऑफ हिज बिजनेस. सोल जज ऑफ द बिजनेस मतलब कि क्या वो डिसीजन ले रहा है वो भी खुद ही जज करना है. ठीक है. अगर कोई रहते हैं तो बता दे ठीक है इससे बेटर कोई और आइडिया हो सकता है, तो कोई बताने वाला वहां है नहीं. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ही इज द सोल जज ऑफ हिज बिजनेस. फुल स्टॉप. ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरिया. ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरिया. ठीक है. ऑल एरिया कहने का मतलब क्या? प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, फिनेंस हो सकता है. ठीक है. दैट इज करके लिख लीजिए. दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, finance, etc. Therefore sometimes his decision may be unbalanced. Full stop. However, he may take the advice from trained staff, but due to lack of finance, he cannot appoint trained and professional staff. ठीक है. फुल स्टॉप. स्पेशलाइजेशन and expertise are not available in sole proprietorship. मैम ये नेक्स्ट पॉइंट है इसी में. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की बात हो रही है. द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज लिमिटेड. He is the sole judge of his business. He cannot be the expert in all areas, that is production, marketing, finance, etc. Therefore, sometimes his decision may be unbalanced. However, he may take the advice from trained staff, but due to the lack of finance, he cannot appoint trained and professional staff. Specialization and expertise are not available in sole proprietor. ये था आपका सोल प्रोप्राइटर का डेफिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फर्म. ठीक है. और मैरिड एंड डीमैरिड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है.
हम लोग अभी तक क्या पढ़े, कितना फॉर्म्स होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से सोल प्रोप्राइटर डिस्कशन हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें जितनी भी कमी है वो पूरी होती है पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या डिमेरिट देखिए हम लोग, इसमें डिमेरिट क्या क्या देखिए, फाइनेंस लिमिटेड होता है क्योंकि 1 पर्सन को बेयर करना होता है। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है कि मोर देन 2 पर्सन आर इन्वॉल्व इन दैट। इसमें क्या हो रहा है कि फाइनेंस का लिमिटेशन कुछ हद तक तो और बेहतर हो जाता है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, लायबिलिटी भी अगेन डिवाइड हो रही है, डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का पार्टनरशिप होता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप का टॉपिक। ओके, बट रिमेंबर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने से पहले क्या होता है, आप लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो पार्टनरशिप शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चंस आंसर आपसे होगा, अगर फील होगा कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो जो लोग नहीं आंसर देने की कैटेगरी में हैं, डू रिवाइज, रिकॉल एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए